particles need to be arranged in a symmetrical pattern in 3 dimensions. We will extend our knowledge of close packing in 2 dimensions to build symmetrical patterns in 3 dimensions. First 2D. मैं इसी के साथ साथ एक बार explain भी कर रही हूँ. Okay. This is the first layer. First layer. Then मतलब ये solid का arrangement है बेटा. Solid can arrange themselves. हम ये मान रहे हैं कि हम just ये कह रहे हैं कि हम arrange कर रहे हैं, but हम arrange नहीं कर रहे हैं. They are arranged. उन्होंने खुद अपने आप को इस तरह से arrange कर लिया है. And then जैसे class में होता है. Then this is second row. This is third row and fourth, fifth row. This is 2 dimensional. Only length and width. Only 2 dimensions हैं बेटा. And यहाँ पे देखो, this is central atom. In this central atom, touching particles कितने हैं? 4 touching particles are there. Okay, 4 touching particles are there. So this is known as square close packing in 2D. अगर single layer होती तो 1D. 1D का कोई significance ही नहीं है. So सबसे best कौन सा होगा? 3D. वो अभी बाद में डिस्कस कर रहे हैं. And this is the coordination number. That is square close packing shows coordination number 4. Square close packing 2D. Now here यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा? यहाँ पे आपको दिख रहा है ये first row है. In first layer it is first row and in voids in this space. Second row is placed. मतलब just लड्डू जैसे अपन ने रख रखे हैं इनको, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रख दिया है. And again third row, and this one is a central हमने consider किया है एक को. It shape क्या आ रही है? Hexagonal shape आ रही है. And touching entities कितने हैं? That is coordination number is 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this is square close packing 2D and it is hexagonal close packing 2D and coordination number is here 2 and here coordination number is 6. It is only 2D. Up to this clear? Aditya? Okay, now next. Let's first study 3-dimensional close packing from 2-dimensional square close packing. In order to build a 3-dimensional structure, ध्यान से देखना बेटा, मैं दोबारा बैक कर रही हूँ कि 3D कैसे फॉर्म हो रहा है. जब तक आप इमेजिन नहीं करोगे कि हमारी थर्ड लेयर कैसे फॉर्म हो रही है, तब तक आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे. ओके, नाउ फर्स्ट एक बार मैं पीछे से फिर बैक कर रही हूँ इसको बेटा थोड़ा सा. From 2-dimensional square close packing. To build symmetrical patterns in 3 dimensions. Let's first study 3-dimensional close packing from 2-dimensional square close packing. In order to build a 3-dimensional structure, it is easier to stack 2-dimensional square close-packed planes one above the other. As you can see, the spheres are aligned horizontally as well as vertically. If the arrangement of spheres in the first layer is considered to be of A type, then the arrangement of spheres in the subsequent layers is also of A type. This 3-dimensional arrangement. Because इधर मेरे हाथ पे देखना, ये 1 row, second row, third row in first layer, ठीक है. इसके बाद हमने second layer रखा है and second layer के बाद third layer, तो ये 3 dimension आ जाएगा. ये 3 dimension है and just एक के ऊपर एक place किया है. Atoms are placed just one above the other. So अगर first row जो है वो A है, तो second one is A, third भी A, क्योंकि just उसके ऊपर 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 place कर रहे हैं. Okay. Is referred to as AAA type packing. If you look carefully, you will find that this arrangement has resulted in the formation of a simple cubic lattice. The unit cell of this lattice is a primitive cubic unit cell. Another way to build a 3-dimensional close packing is from a 2-dimensional hexagonal close packing. As you can see,
The depressions of the first layer are the ideal seats for the next layer of spheres. ये पता ही है ना, By placing the ज्यादा आइडियल कौन सा होगा? बैक में अगर तुमने देखा था स्क्वायर वाले में वॉइड स्पेस क्या थी? ज्यादा थी. ओपन स्पेसेस, एम्प्टी स्पेसेस ज्यादा थे. इसका मतलब है कि बहुत क्लोज पैक्ड नहीं है. यहाँ पे एम्प्टी स्पेसेस कितने कम है, बिकॉज ट्रायंगुलर वॉइड्स फॉर्म हो रहे हैं. क्या फॉर्म हो रहे हैं? ट्रायंगुलर वॉइड्स फॉर्म हो रहे हैं. एंड इन दिस इज फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट लेयर. फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट लेयर. क्लियर? मेरा सेंटेंस ध्यान से सुनना बेटा. फर्स्ट लेयर है, उसमें फर्स्ट रो है. देन दिस इज second row of first layer, which is present in the voids of the first row. Same way अपन ने थर्ड को कर दिया है, एंड ये एक के ऊपर एक आ रहे हैं. अब आप सेकेंड लेयर कैसे बनाओगे बेटा? हम जस्ट अभी फर्स्ट लेयर के रोज की बात कर रहे हैं. सेकेंड लेयर की बात हम अभी इसके बात करेंगे. अब यहां तक एक बार देखो. the constituent part. As you can see, the depressions of the first layer are the ideal seats for the next layer of spheres. By placing the constituent particles or the spheres in the depressions of the first layer, a second plane of closed packed spheres lying on the first plane is generated. It is important to note that when the spheres are placed on the voids of B-type in the first layer, the C-type voids are left unoccupied. देखो बेटा, हमने नीचे वाली जो लेयर थी उसके ऊपर सेकेंड लेयर रखी है. सबको मुझे लग रहा है 3D में ज्यादा क्लियरली समझ में आ रहा होगा. अगर आपको लगता है बेटा कि बैक करना है, सो प्लीज राइट ऑन चैट बॉक्स, मैम बता देंगे. ओके, यस. सो मतलब फर्स्ट लेयर थी. फर्स्ट लेयर में हमारे पास दो तरह के वॉइड्स थे. Plane of closed packed spheres lying on the first plane is generated. अब सेकेंड लेयर आ रही है. It is important to note that when the spheres are placed on the voids of B-type in the first, clearly only B-type जो है वो जो है वो ऑक्यूपाई हुआ है, एंड C-type voids जो है वो अनऑक्यूपाइड है. I think up to this clear. In first layer, all the voids are AA type, small AA type. When we form second layer, then in second layer, only B जो है वो cover हुआ है, that is upward या downward कोई सा भी कर लेना, और C जो है वो vacant है. Now, first layer, the C-type voids are left unoccupied as no sphere can be placed in them. As the spheres of the two layers are aligned differently, let the arrangement of spheres in the first layer be referred to as A-type, and in the second layer as B-type. A closer look at the arrangement indicates the formation of two different kinds of voids, marked as O. एक बार क्लियरली इसको देख लो बेटा, इसीलिए मैं बार बार इसको ऑफ कर रही हूँ ताकि आपको बहुत क्लियरली से. And D. If you look carefully, you will find that this arrangement has resulted in the formation of a simple cubic lattice. The unit cell of this lattice is a primitive cubic unit cell. Another way to build a three-dimensional close packing is from a two-dimensional hexagonal close packing. As you can see, the depressions of the first layer are the ideal seats for the next layer of spheres. By placing the constituent particles or the spheres in the depressions of the first layer, a second plane of closed packed spheres lying on the first plane is generated. It is important to note that when the spheres are placed on the voids of B-type in the first layer, the C-type voids are left unoccupied as no sphere can be placed in them.
As the spheres of the two layers are aligned differently, let the arrangement of spheres in the first layer be referred to as A type, and in the second layer as B type. A closer look at the arrangement indicates the formation of two different kinds of voids, marked as O and T. It is also called cubic close packing, CCP, or face-centered close packing, FCC. Metals like iron, copper, and silver crystallize in CCP structures. Further, as can be seen in hexagonal close packing and cubic close packing, a sphere has the coordination number 12. Yes, coordination It is in number 12 contact. कैसे, पहले मुझे ये समझाने दो इस डायग्राम से. This is one layer, okay? Second layer ले रहे हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6. That is in one layer. One constituent particle is surrounded by 6 other constituent particles. And अब ये second layer है. अगर ये मान लो ये center वाला second layer है, this one is third layer and this is first layer. First layer को आप इसको ऊपर लेके जाओ. Imagine that ये इसको touch कर रहा है. Then central atom is touches the only 3. Okay, I will repeat. This is the central yellow color जो है वो उसका हमें coordination number find out करना है. First layer, second layer and third layer. In second layer, it is surrounded by 6 other constituent particles. Plus, अब तुम इस वाले लेयर को इसके साथ टच करोगे, so only 3 points जो है वो central atom को टच कर रहे हैं. That is 6 plus 3, 9. And इन तीनों को भी अगर इसी के साथ voids पे टच करोगे, ये यहाँ पे टच करेगा, ये यहाँ पे टच करेगा और ये यहाँ पे टच करेगा. So total number of coordination number क्या होगा? 12. In the same way, ये different arrangement है. Different arrangement is in different voids पे. So again it is 6. वही same first layer में 3 टच करेंगे and third layer में भी 3 टच करेंगे. But it is of ABA type and it is a ABC type. What is the difference? This is SCP type. This is CCP type. In SCP, AB type है, that is first and third layer is same. But here first and third layer is different. Fourth layer जाके same होएगा. अभी थोड़ी देर बाद एक और वीडियो में इसको और clearly show हो जाएगा बेटा. Now अब एक बार With 6 layers in its own layer, 3 more in the layer above, yes, and 3 more in the layer below. Also, both the forms hexagonal close packing and cubic close packing are equally efficient in terms of filling up space. In both of them, 74% of the space in the crystal is filled up. न्यू टाइप के लिए, ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए, मतलब कितना स्पेस फिल हो रहे हैं, बिकॉज एक ना एक वॉइड तो खाली रह रहा है ना. एबी टाइप में क्या था, एक साइड के वॉइड्स खाली थे. सो ओनली ऑक्यूपाइड कितना स्पेस हुआ था? 74%. एंड रिमेनिंग 26% जो है वो वेकेंट था. इन द सेम वे क्यूबिक क्लोज पैकिंग ऑल्दो एबीसी टाइप है, पर इसमें भी अगर एक बार बी टाइप ऑक्यूपाइड हुए हैं तो सी टाइप वॉइड्स अनऑक्यूपाइड थे, एंड थर्ड लेयर में अगर सी टाइप ऑक्यूपाइड हो गए हैं तो बी टाइप अनऑक्यूपाइड है. तो दैट्स व्हाई टोटल स्पेस फिल्ड कितना है? ओनली 74%, एंड दैट इज दे आर मोर एफिशिएंट. Let us now look at the number of tetrahedral and octahedral voids present in these arrangements. In a close-packed structure, whether CCP or HCP, if there are n spheres in the packing per unit cell, बहुत important है बेटा, मैं इसको simultaneously explain करती जा रही हूँ. एक लाइन लिख लो आप लोग अगर बुक लेके बैठे हो. Number of spheres, if number of notebook अगर लेके बैठे हो, number of spheres is equals to 9. N, sorry, number of spheres is equals to n,
एंड नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो बनते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मीन्स ऑक्टाहेड्रल शेप में होंगे, एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं n, दैट इज नंबर ऑफ स्फीयर इज इफ n है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितने होंगे, इक्वल n होंगे. अब नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कंफ्यूजन आता है, जो न्यूमेरिकल्स में करवाने वाली हूँ. लास्ट टर्न पे परसों डिस्कस किया था. इन प्रिमिटिव नंबर ऑफ स्पेयर्स कितने थे, 1 फॉर प्रिमिटिव, क्योंकि कॉर्नर्स पे तुम्हें दिख रहे हैं, कॉर्नर्स पे इस डायग्राम में कॉर्नर्स पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट इज इन प्रिमिटिव स्ट्रक्चर. इधर इट इज कोई सा भी हो, हेक्सागोनल हो चाहे कोई सा भी हो, सीसीपी. इट इज मेड बाय 8 एटम्स एंड पार्टिसिपेशन कितना था, ओनली 1/8 पार्ट. सो a number of spheres for primitive, for corner it is only 1. कितना होगा, हमेशा क्या रखोगे, 1. so first point क्या लिख रहे हो, number of spheres is equals to n, and in case of ionic compound, anion underline कर लेना, anion forms या anion occupies corners of the cube. क्योंकि एनायन लार्जर साइज के होंगे, बीच में आ नहीं पाते हैं, सो ये कॉर्नर ऑक्यूपाई करेंगे, दैट इज दिस. ओके, अप टू दिस लिख लिया है. नेक्स्ट सेकंड लाइन लिखो, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्फीयर्स, दैट इज n इज इक्वल टू n. नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्फीयर्स, दैट इज n इज इक्वल टू n. एंड थर्ड पॉइंट, number of tetrahedral voids is equals to 2n. Number of tetrahedral voids is equals to 2n. That is अगर sphere n है तो total number उसके साथ कितने associate होंगे, 2 tetrahedral voids. अभी मैं फॉर्मूला डिराइव कराऊंगी, पहले जस्ट वीडियो देख रहे हैं क्योंकि तुम्हें 3D में एक बार एक्सप्लेनेशन आ जाएगा क्लियर बेटा. Yes. Then the number of octahedral voids is the same as n, while the number of tetrahedral voids is equal to 2n. For example, in a CCP arrangement, if 4 atoms or ions are present per unit cell, then the number of octahedral voids is also 4, while the number of tetrahedral voids is 8. In a row touching one another. In this arrangement, We have already as learnt are spheres. In that the the close communication packing system helps transmission of information from the sender to the user of information. Let us now learn about some terms used to describe different devices and processes in a communication system. in one dimension, the part A person using a microphone and speaker to transmit his voice over a distance is an example of a communication system. The microphone receives the voice signal and prepares particles the are arranged transmission in to a the row wire. touching one another. In The this device arrangement, that receives the incoming signal contact and with prepares it for adjacent transmission particles. through a channel is adjacent Now ये और particles. क्लियर हो रहा है बेटा इस वीडियो से. Hexagonal close packing in 2 dimensions. In the hexagonal close packing in 2 dimensions, one row of close packed particles is placed above the other in such a way that the particles of the second row fit into the depressions of This the one. first row. Similarly, a third row is placed above the second one such that its particles fit into the depressions of the second row and so on. This forms a close-packed layer of particles in which the particles of the first row are aligned with that of the third row and the particles of the second row are aligned with that of the fourth row.
In such a layer, each particle has 6 immediate neighbors. और brightly है, If the different centers of the colors 6 हैं. immediate neighbors of a particle are joined, a regular hexagon is formed. Therefore, this kind of packing in 2 dimensions is called hexagonal close packing. In the hexagonal close packing, very less empty space is left. The empty spaces left are triangular and are aligned differently. Now at some places, the particles of the second layer cover the triangular voids of the first layer. At such places, सेकेंड लेयर से पहले एक बार फर्स्ट लेयर को और क्लियर करना है. layer cover the depressions present in the first layer. Hexagonal close packing in 3 dimensions. In the hexagonal close packing in 3 dimensions, one hexagonal close packed layer is placed over the other in a manner that the particles of the second layer cover the depressions present in the first layer. As a result, the particles of the first and second layers are aligned differently. Now at some places, the particles of the second layer cover the triangular voids of the first layer. At such places, a new type of void is formed. This void is surrounded by 4 particles and is called a tetrahedral void. Alternatively, at other places, the triangular voids of the first layer coincide. Tetrahedral voids carbon को सोचो. 3 voids are in one layer. 3 spheres are in one layer. उनके बीच में जो void है उसके ऊपर second sphere है. सेंटर को टच करोगे, ये देखो ये वाले, ये 3 इस साइड से दिख रहे हैं, ये सेंटर एंड बैक साइड वाला. सो कैसा शेप आ जाएगा? टेट्राहेड्रल वॉइड. जब कॉपी में 2D में दिखाऊंगी तब भी क्लियर हो जाएगा. दिस इज फर्स्ट लेयर एंड दिस इज सेकेंड लेयर. फर्स्ट लेयर में इसके पीछे एक और भी है एंड ये उसके ऊपर है. सो इट इज फॉर्म्स द टेट्राहेड्रल वॉइड्स. कौन सी वॉइड फॉर्म कर रहा है? Tetrahedral, because 3 in one layer and a second one is sphere in उसके voids में है. So now next. With that of the second layer. At such places, a new type of void is formed. This void is surrounded by 6 particles and is called an octahedral void. The third layer is then placed over the second layer, covering its tetrahedral voids. The particles of the third layer in this case are exactly aligned with that of the first layer. So, if the first layer is A-type and the second layer is B-type, the third layer will again be A-type. This pattern repeats in the subsequent layers and is called AB-AB packing pattern in 3 dimensions. The structure resulting from this packing pattern is called a hexagonal close pack structure. Coordination number in a hexagonal close pack structure. In a hexagonal close pack structure, each particle remains in contact with 12 particles. समझ में आ रहा है? It is in one row. एक ही layer पे है. It is upper layer. This number that determines the number of particles in close proximity is called coordination number. So, in a hexagonal close pack structure, the coordination number is 12. In this module you have learnt, in the close packing in 1 dimension, the particles are arranged in a row touching each other. In the 2-dimensional hexagonal close packing, the particles of one row are placed in the depressions of the other row. When 2-dimensional hexagonal close pack layers are placed one above the other in AB-AB packing pattern, a hexagonal close pack structure is formed. The number that determines the number of particles in close proximity is called coordination number. It is 12 in the case of a hexagonal close pack structure. Now बेटा अब एक बार स्टॉप कर रही हूँ शेयरिंग.
दोबारा अल्पना मैम, आफ्टर 5 मिनट इन फर्स्ट लेयर सेकेंड रो प्रिपेयर कर रहे हैं, देन वी गेट 2 डायमेंशन, एंड इफ फर्स्ट लेयर के ऊपर हम सेकेंड लेयर प्लेस कर रहे हैं, देन इट इज थर्ड लेयर. सो यहाँ तक ये वीडियो इसलिए दिखाया था ताकि 3 डायमेंशन एक बार आइडिया हो जाए. नाउ वी विल डिस्कस थ्रू नोट्स. स्क्रीन शेयर करके नोट्स बता रही हूँ बेटा, देखना शुरू करो. बिल्कुल, कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ अ पार्टिकल. नोट्स में मिल जाएंगे, ये मैंने नोट्स भेजे हैं, नोट्स में है. क्लोज पैकिंग इन 1D, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर. इसको अगर ले रहे हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2. नाउ क्लोज पैकिंग इन 2D, सेम जो देखा है अभी वीडियो वही है. इट इज this coordination, this is a central atom and it is surrounded by 4 atoms. shape कैसी आ रही है? square close packing shape आ रही है. Here coordination number is 4. Now this is again 2 dimension, but हम सिर्फ अभी एक लेयर की बात कर रहे हैं. दिमाग में ये बिल्कुल क्लियर रखना बेटा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता है. ये हम सिर्फ एक लेयर की बात कर रहे हैं, एक लेयर, उसमें हम एक के बाद एक रो कर रहे हैं अरेंज. जैसा कि आप लोग क्लास में बैठे हो, सपोज की फर्स्ट टेबल है, उसके पीछे सेकंड टेबल है, उसके पीछे थर्ड टेबल है, जस्ट एक के पीछे एक था इन स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, एंड उनके बीच में जो स्पेस है उनमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में होगा. नाउ हियर इट्स शेप बिकम्स हेक्सागोनल शेप आ गई है, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो रहा है? 6. 1 2 3 4 5 6. इट इज 2 डायमेंशन. इनमें ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी नहीं होती है, बिकॉज वॉइड्स देख रहे हो कितनी स्पेस में है. दीज आर एम्प्टी स्पेसेस. एम्प्टी स्पेसेस है तो ज्यादा फिल नहीं है. हियर अगेन 2 टाइप ऑफ एम्प्टी स्पेसेस, एक तो डाउनवर्ड्स है, एक अपवर्ड्स है. सो दीज पैकिंग आर नॉट एफिशिएंट. नाउ इन केस ऑफ 3 डायमेंशन में आ गए हैं बेटा. In 3 dimension, this is the first row and the first layer, first row. This is second layer that is just placed over first layer, just एक के ऊपर. अगर आपको मैं बिल्कुल स्फीयर हार्ड बॉल्स दे दूं और मैं बोलूं कि एक के ऊपर एक अरेंज करो, तो अपन पॉसिबल नहीं है कि हम अरेंज कर पाए. क्यों? क्योंकि बिल्कुल हार्ड स्फीयर है और तुम्हें पता है स्फीयर एक के ऊपर एक जस्ट इस तरह से अरेंज नहीं हो सकते. बट दिस अरेंजमेंट इज फॉर सॉलिड्स, सो इट इज पॉसिबल. एंड यहाँ पे तुम्हें शेप्स समझ में आ रही है. इट फॉर्म्स सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर एंड दिस इज नोन एज AAA टाइप. सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर AA टाइप फॉर फ्रॉम स्क्वायर क्लोज पैकिंग ऑफ 2D. नाउ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D. आज एक बार नोट्स को देख के पढ़ लेना बेटा. अगर जरा सा भी डाउट हो, कल मैं इसको दोबारा क्लियर करूंगी और मैं दोबारा फॉर्मूला बताऊंगी. ओके इसमें देखो, प्लेसिंग फर्स्ट लेयर जो डिफरेंट कलर से शो कर रहे हैं, लास्ट जो लाइट कलर्ड है इट इज फर्स्ट लेयर, एंड इसके ऊपर इसके जो वॉइड्स थे उन वॉइड्स के ऊपर हमने स्फीयर रखे. अब ध्यान से देखना, सेकेंड रो में वॉइड्स पे रख दिए. 2 तरह के वॉइड्स बन रहे हैं. फर्स्ट वन इज टेट्राहेड्रल वॉइड्स और सेकेंड वन इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड. टेट्राहेड्रल वॉइड्स मैंने अभी बताए थे. तुम अगर बहुत ध्यान से देखोगे, मेरे कर्सर पे ध्यान देना, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, these are the 3 constituent particles of first layer. And this dark color, cursor दिख रहा है आदित्य? Kunal, cursor is visible. This is 1 2 3 from first layer and this is constituent particles of second layer. Just उसके ऊपर आ गया है and it forms tetrahedral voids. It forms tetrahedral voids. अपने नोट्स में भी देखना. Now second देखो, इस यहाँ पे बिल्कुल इस वाले को देखो, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड इसके ऊपर ये लाइट कलर से शो हो रहा है. सो ये कैसी शेप आ रही है? बिल्कुल यस आदित्य, वेरी गुड, हेक्सागोनल शेप आ जाएगी. एंड अब ये कौन से वॉइड्स हो जाएंगे? ये वॉइड्स जो होंगे ये होंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. मतलब क्या होंगे? 3 एक साइड में होंगे, 3 डिफरेंट साइड्स में होंगे. मेरे हाथ को देखना. एंड अब इसमें जो वॉइड्स स्पेस बचेगी उसकी शेप कैसी होगी? अगर अपन ज्योमेट्री देखेंगे तो ऑक्टाहेड्रल. नाउ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D. ओके टाइम हो गया क्या? ओके मैं इसको ना, मैं